Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. So we are starting this offline as well as online class of economics optional. The offline class we are starting after a gap of around 1.5 year. Although online classes चल रही थी, but offline class we are starting after a gap of around 1.5 year. So in the initial part, I will be basically discussing the course content, the strategy of economics optional for UPSC mains, and how we will be conducting the classes, what are the features of the class, from where to study, that means the source of economics optional paper 1 as well as paper 2, and what will be the test series schedule. So everything will be discussed in the, I will be taking around a half an hour, or you can say 45 minutes to explain the strategy. That means basically we are explaining the what will be the orientation. So whatever I am writing, just I request all to write everything in your notebook. So starting with the content part first. Starting with the content part first. So the optional, as you know, is divided into two paper. So paper 1, within paper 1 there are 5 parts. One part will be advanced micro, second part is advanced macroeconomics, third section is money, banking and finance, banking and finance, fourth is international economics, and fifth part will be growth and development. So you can say paper 1 there are 5 different section. Micro related question will be there, macro related question will be there, money, banking and finance related, international economics, as well as growth and development section. This within this micro there are 4 parts. One is a Marshallian and Wallacian approach of price determination, second is distribution theories, alternative distribution theories, third is market structure, and the fourth one is welfare. So here I will be just highlighting an important aspect regarding the syllabus. You have to note that there are some part of the syllabus which is obviously explicitly mentioned, that you have to read Marshallian and Wallacian analysis, you have to read market structure, you have to read welfare economics, but the syllabus is not specifically mentioning that you have to read production and cost also in the micro, you have to read consumer theory as well, you have to read market failure as well. So there are certain unmentioned part, unwritten part of that syllabus. So just remember, one part of the syllabus you are able to see, but there will be questions outside that part as well. और वो कहाँ से रेफर करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको रेफर यूज करने हैं. Obviously that will be, we will be interpreting the questions of the past year, and based upon that we will be extending the syllabus as well for the content as well. So that means when you see the syllabus in microeconomics is basically containing Marshallian and Wallacian approach, distribution theories, market structure and welfare criteria, just only 4 parts. Nowhere it is mentioning that consumer theory you have to read, production and cost you have to read, market failure you have to read, input market you have to read, but we will be covering all, we will be basically covering all. And for that purpose we have basically separated all the questions, topic wise questions. For example, when we start with within micro, when we start with market structure, then within market structure obviously we have to deal with the product market mainly, but there can be questions related to the input market.
There can be questions related to the market failure. So all questions are clubbed here. So a topic wise detailed question list is separated and uploaded on site. That means what are the various questions asked from market structure topic. So if you see that topic wise question list, you will be able to analyze. One thing is that what is the weightage of that section. So if you see question of 2020, you find question number 1, question number 2 and question number 3. There were 3 questions from market structure, but all 3 were surprisingly only from the oligopoly topic. You read market structure including perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, but the question was only from oligopoly part. You can say this was disproportionate, this is not a norm. Generally the question is basically well represented in the sense, for example, in 2019 one question was from perfect competition, other question was from monopoly, next question was from oligopoly, and next was from market failure. So we should be expecting question like this in 2019. So there were 4 questions. In 2018 again you find 4 or 5 parts. So generally 4 to 5 sub part will be there in micro from the market structure. So market structure weightage in microeconomics will be the, you can say it has a significant weightage. So most majority of question will be from the market structure. Similarly, when you read the welfare economics, all questions related to the welfare economics, distribution theories, all are basically separated. उस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने से आइडिया लगता है कि उस टॉपिक में कहाँ तक आपको स्ट्रेच करना है, कितने क्वेश्चन बेसिकली आपको कवर करने हैं. सो द पर्पस इज बेसिकली दैट. So you don't have to buy previous year question or 10-year question. Everything is basically there, and it has been arranged in an organized manner. Then the second section in micro will be macroeconomics. In paper 1 is macroeconomics, but in macro also the syllabus is just specifying that you have to read classical economics, Keynesian economics, neoclassical, neo-Keynesian, without mentioning inflation and unemployment, without mentioning design of monetary policy. But there are many questions on Phillips curve, there are many questions on from Okun's law, design of monetary policy, inflation targeting, interest rate targeting. So we have to cover this macro section also in detail. Generally the weightage, although it is not written, but we find that from micro section you will be getting question of 90 to 100 marks. You can say 80 to 90 or in the range of 90 to 100 marks. From macro also 80 to 90. Sometimes it could be the other way around. Macro का weightage ज़्यादा हो गया, micro का weightage कम हो गया. International economics and growth and development. Usually the weightage is around 100 or 90 to 100, and weightage from money and banking is generally remaining in the sense maximum 30 to 40 approximately I am writing. So it is not well represented, you should not be that totaling that. What I am trying to say is that the once you know the question pattern, this overall weightage is according to the overall question asked. So in any paper, whether it is paper 1 or paper 2, the pattern of question remains same. So question paper pattern is that your question number 1, which will have 5 parts, 10 marks each, that will be compulsory. So first question will have 5 parts, and that question number 1 will be compulsory for you. So 50 marks question is compulsory, 5 parts is compulsory. Then question number 2 will have 3 parts. Generally the weightage is 20 plus 15 plus 15, so approximately.
Question number 3 will also have 3 parts, A, B and C. Question number 4 as well, 3 parts, A, B and C. So first 4 question is section A. First 4 question is section A. So you have to attempt, obviously compulsory question you have to attempt, and at least one question out of these 3, at least one. Then question number 5 will again have 5 parts, and this first question in section B is again compulsory. So from question number 5 we start section B. Question paper का section B है. First question in that section will be compulsory. So 50 marks compulsory question here, 50 marks compulsory question here. Then question number 6 will have 3 parts. 7th question will have 3 parts. 8th question will have 3 parts. And again you have to attempt this compulsory question and at least one question. So 2 compulsory question and at least one question from each section. That means in totality you have attempted now 4. And now you are free to choose the 5th question from any section. So this instruction is very clear. You have to attempt at least one question from each section. So you have to attempt that, obviously that compulsory, and at least one question from each section. So for example, suppose you attempted question number 2 here and question number 7 here, then you are free to choose the last question from any section. And generally in section B you will find question related to international economics and growth and development. International and growth and development usually it is in section B, and micro and macro questions are generally in section A. Although rigidly follow नहीं होते, कभी कभी आपको exceptionally मिल जाएंगे सेक्शन ए के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन और सेक्शन बी के अंदर माइक्रो का क्वेश्चन. सो इफ यू काउंट दी ऑल सब पार्ट्स there are 28 question, 28 we can say parts in total. That means counting A, B, 5 question here, 5 question here and 3 question each here. So in totality there are 28 question, and you have to you are basically attempting 19 question out of that. 5 question here, 5 question here, 10 compulsory part and 3 question और करने, 3 into 3. So 19 question or 19 parts of the question you have to attempt in 3 hours. So that means for one answer you have less than 10 minutes. ठीक है, less than 10 minute का time है. So you have to be very accurate in writing that answer. There will be space constraint as well as there will be time constraint. So space constraint and time constraint both will be there. So it require a lot of practice. मतलब फाइनल पेपर में आंसर लिखने के लिए, इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए, सो दैट यू कैन स्कोर मोर, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. And for that practice I will be explaining in detail how we will be helping you and what you can do. But regarding the score, how much marks we can expect and what is the recent trend, ठीक है, अब 2020 के जो marks है वो भी available है. So we have a larger pool of data and we can help you to frame basically a realistic goal, that is what you should be aiming. Now in paper 1, the approach of paper 1 is more objective in nature, so there is greater objectivity and it require a lot of, we can say, technical answer as well. Technical in the sense you have to write as it has been explained in the core book. So for example, suppose question is on Bain's limit price. So as Bain has defined the limit price, you have to explain as it is, don't change the words. If the question is on classical dichotomy, money is neutral in the classical model, simple state question, then you have to explain as it has been explained in the Freud. So you are expected to basically reproduce that language, reproduce that statement, reproduce that keywords and reproduce those sentences. But you can reproduce those sentences in your answer only when you have practiced a lot, only if you have written it at least, I will say, 2 or 3 times. Without that it will be very difficult. So that will be
that will be covered as a part of your test series, that will be covered as a part of your daily answer writing practice. So what the nature of class will be, that in every class I will be suggesting you to answer few questions, at least 2 questions every day. That means based upon this class, that is say first class itself, I will be saying these 2 questions you can attempt. All those questions are there in your portal, and all topic wise question has been provided. So like market structure, welfare, macro, international growth and development, even in paper 2. So choose 2 question every day, try to answer 2 question every day. So over a period of time, let us say 4 months, 5 months, you will have a larger pool of questions, and those questions you have attempted, those questions you have written, and these questions are in addition to your test series. ये इसके टेस्ट सीरीज के अलावा होंगे. टेस्ट सीरीज, the obviously the test series is part of the course. Now in the test series there are 12 tests, and in every test the pattern will be same, that means 28 question. So 12 test into 28, so 336 number of question वो एक टेस्ट सीरीज के पार्ट होंगे, and will be getting model answer of majority of question, as well as there will be discussion video as well. So that means I will be explaining how to write exactly. ठीक है, you have to write it, but for reference that what should be an ideal answer. So model answer will be provided to you for the test series, and we will be discussing questions as well. So discussion video will also be there, apart from obviously the evaluation of paper, and you can have one-to-one discussion as well. Once you get your answer sheet, you can call. I will be having your evaluated answer sheet with me, then you can discuss one-to-one as well, that what will be your specific requirement, what will be your specific need. So that one-to-one discussion is also possible. That means everything, remember, when you answer the test series, you have to download your question paper or answer sheet, and after writing that answer you have to scan it and upload it in your own portal. So it will be evaluated on portal, and it will be the evaluated answer sheet you will be getting on the portal, and it will also be sent on your mail as well. So this is basically the question paper pattern for paper 1. The pattern for paper 2 is also same. That means in paper 2 also there will be 8 question in total, divided into 2 section, and question number 1 and question number 5 will be compulsory. Now some students say how much we can score, or what should be the realistic target in paper 1. My firm belief is that even if the paper is very difficult, like the question of 2020, the question paper of 2013, so there are certain years in which the question paper, we also find that this question paper is difficult. So even when the question paper is quite difficult, in that scenario also you can expect that question of 150 marks at least will be straight and doable. ये ओवरऑल जो क्वेश्चन का पैटर्न है, 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो रहे हैं, मतलब 400 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है. आउट ऑफ दैट 400 यू अटेम्प्ट 250. सो 800 का पेपर पैटर्न है, उसमें आप 250 अटेम्प्ट कर रहे हैं. और ये जो ब्रेकेज मैंने लिख रखा माइक्रो मैक्रो का, वो 400 के लिए है, नॉट फॉर 250. ठीक है, तो पेपर का स्ट्रक्चर होगा वो 400 का होगा. आप 250 मार्क्स का मतलब यू आर अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चन, बट द पेपर इज बेसिकली ऑफ 8 क्वेश्चन. आउट ऑफ दिस वेरियस वी कैन से 28 पार्ट्स, 150 मार्क्स क्वेश्चन विल बी इजी और डायरेक्ट, या फिर ऐसा हो सकता है जो आपने लिख रखा हो उसको पहले से टेस्ट में लिखा है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लिखा है, अदरवाइज प्रैक्टिस कर रखा है. तो 150 मार्क्स मतलब आउट ऑफ 400 मैं कह रहा हूँ 150, उतने मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा आपको इजी लगेंगे, मतलब आपने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है. सो अगर वो प्रैक्टिस्ड है और वहाँ पे एग्जैक्टली आप आंसर लिख लेते हैं, तो आउट ऑफ दैट 150 यू कैन स्कोर 2/3
2/3 अगर स्कोर करते इट इज कंसिडर वेरी गुड स्कोर इन एनी ऑप्शन इन फैक्ट, बट आउट ऑफ दैट 150 यू कैन स्कोर 100. जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट हो गए, जो आपने प्रैक्टिस नहीं किए हुए थे, इफ़ यू जस्ट मैनेज मीन्स अराउंड 35-40 passing marks. So if in the remaining 100 you can score 40 around, then the total will be of 140, and 140 is considered as very good score nowadays, given that no one is scoring, let us say, exceeding 300. In 2018 there were 4 or 5 students from here only, their score was in excess of 300, but last 2 years the score is not in excess of the 300. 285, 290, 275 is considered as very good score last 2 years at least, we can say. It could be, the trend could be different, but I am updating you what is happening today, what has happened in 2020 paper. So, but even if the paper is difficult, even if the marking is stiff, you can manage, I will say, 140 at least, even when the difficult. Now if it is easy and if you get more expected questions, then your score can be more obviously, so you can exceed that 150 or you can approach 160, 170 for paper 1. But if you secure at least 140 in paper 1 and maintain same in paper 2, then a score of 280 is very good, given that the top rankers are also scoring in that range. ठीक है, I will be sharing with you some detail of this year result. You can see the marks of the student of the previous year 2018-19, वो सारे इंफॉर्मेशन साइट के ऊपर अवेलेबल है. बट 2020 का जो रिजल्ट है इसमें 285 marks in optional, rank is 167, 270, 222, 270 marks, 247, 230. यू कैन से 250 से नीचे ये कंसेप्ट होता था कि 250 से नीचे अगर कोई ऑप्शन में स्कोर कर रहा है तो ऑप्शन की वजह से ही वो स्टूडेंट बाहर हो जाएगा. बट दैट इज़ नॉट द केस, मतलब जितने भी इस तरीके के मिथ हैं वो सारे ब्रेक हो रहे हैं. यू कैन फाइंड मेनी एग्जाम्पल. ठीक है, हर तरह के एग्जाम्पल आपको यूपीएससी के रिजल्ट के अंदर मिल जाएंगे. 230 इवन 225 ऑप्शनल में स्कोर करके भी स्टूडेंट फाइनल लिस्ट में मैनेज करते हैं. तो आप ऑप्शनल से रिलेटेड अगर आप, मतलब ये दिमाग में नहीं बिठाना है कि अगर मैंने 270 स्कोर नहीं किया, 250 स्कोर नहीं किया तो मेरा फाइनल सिलेक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं. रिमेंबर 225 पे भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है और 270 280 स्कोर करके भी स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं होते. मतलब ये जो लिस्ट में याद दे रहा हूँ उसमें one student, you can find that list here. Beneath the score 269, his score in paper 2 was, I think, highest 158, but not selected finally. Nikhil scored 263 and we can say 2 consecutive interview, but not selected finally. So it is not guaranteed that if you are scoring 217 optional you will be selected, and if you are scoring only 225 you will not be selected. So there are various examples. So but the overall trend is that the score in excess of 260 is, you can say, it is a fairly good score. 2020 के बेसिस पे एटलीस्ट ये कह रहे हैं. द ट्रेंड ऑफ 2021 कुड बी डिफरेंट, बट लास्ट ईयर के जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ. 2018 के मार्क्स के अलग ट्रेंड थे, उसमें 290 प्लस वाले बहुत सारे स्टूडेंट थे, 300 प्लस के भी स्टूडेंट्स थे. इवन इन दिस ईयर द स्टूडेंट हु स्कोर्ड रैंक 4 विथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, I got the information that his score in paper 1 is only 130. So by scoring only 130 also you can secure a rank of 4, that means top 10 के अंदर है. So that basically reflect that the in paper 1 the marking was difficult. ठीक है, वो एक reflection है. So these are examples. So you have to be aware of that marking scheme, and from my side I will say that a target of 280 plus
is a realistic target. Don't set an unrealistic target like you will score in 350 375. ठीक है, वो 280 का जो स्कोर है, 260 प्लस भी वैसे बेटर स्कोर है, बट यू शुड बी एमिंग अराउंड 280 टू 300 मार्क्स. ये उस सिचुएशन के लिए जब पेपर डिफिकल्ट है. अगर इजी मिल गया, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन मिल गया, ये ऑब्वियसली यू कैन स्कोर मोर देन 300. क्लियर? So that is one part. Now the second part is that we have to discuss in this orientation is what will be the sources for micro, for macro, for money and banking, international economics, growth and development. Now those sources are in fact mentioned in your test series schedule. So test series schedule is basically, you can find that schedule online. So test started just yesterday, 17th of October, and the syllabus of each test is there. So in test number 1, micro include only market structure, and syllabus is monopolistic, duopoly and oligopoly. For this topic you have to read chapter 5, 6, 7, 8, 9, 10 and chapter 13 from Kotsianis. Chapter number 5 to 10 and chapter number 13 from Kotsianis. You don't need to buy that book. These chapters are provided to you in the study material in the form of Xerox. So you don't need to read entire Kotsianis. You are reading a few selected chapters. Compilation of those chapters are basically compilation of those chapters from various books are basically included in your study material. In the first test, macro include classical and ISLM topic. For classical model, chapter 3 and 4 Freund, and for Keynesian model, chapter 3, 4, 5 and 7 Dornbusch and Fisher. So for each topic there is a, you can say there is a specialized book, and in that book there will be specialized chapters. उस चैप्टर का जो कंपाइलेशन है वो आपका स्टडी मटेरियल होगा. एंड दिस फॉर टेस्ट नंबर 1, फॉर टेस्ट नंबर 2, 3, 4, 5 till 12, all topic wise has been provided. So what will be the source of studying any topic is mentioned there. And again I repeat, you don't need to buy those different sources. ठीक है, वो आपको स्टडी मटेरियल के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं. You need to keep, I think, दो स्टडी मटेरियल में नहीं है. One is international, for international economics, Salvatore, usually almost all students have, and second is in the growth and development section ML Jingen. तो ये दो बुक आप बाई कर सकते हैं. जिस बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम्प्लीटली एमएल जिंगन से नहीं पढ़ना. जो एमएल जिंगन से कवर हो रहा है वो वहाँ एमएल जिंगन से करेंगे. जो एमएल जिंगन में कवर नहीं हो रहा है, लाइक रोमर मॉडल के बहुत सारे क्वेश्चन अब रिसेंटली आ रहे हैं, तो जो सेक्शन वहाँ से कवर नहीं हो रहा, फॉर दैट पर्पस स्टडी मटेरियल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, विच विल कंटेन वेरियस सोर्सेज लाइक Jones chapter 4 and 5, then few chapters from Devraj Ray, few chapters from Mankiw specifically for the solar model. So study material plus those books, that will be your entire source. Now, many of you will be having HL Ahoja, तो आप स्पेसिफिकली मैंने HL Ahoja कहीं यूज़ नहीं किया, बट ये नहीं कह रहा कि वो आपको नहीं रेफ़र करना है. बट HL Ahoja इज़, जब आप HL Ahoja भी पढ़ रहे हैं तो रिमेंबर उसके अंदर भी जो कंसेप्ट होगा वो कोट्सानिस से ही बोरोड है. मतलब कोट्सानिस में आप कह सकते हैं कि वो प्राइमरी सोर्स हो गया, HL Ahoja उसी का सेकेंडरी सोर्स हो गया. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट बी, देयर आर फ्यू टॉपिक्स नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड क्लियरली इन HL Ahoja, लाइक फॉर एग्जांपल चैम्बरलिन मॉडल, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर. But Kotsianis explained that Chamberlain model in model A, model B, model C very clearly, and HL Ahoja is not explaining that part very clearly. So for that purpose you should be reading Kotsianis. Plus HL Ahoja is very repetitive, a lot of time will be consumed. Like it starts with the consumer theory, और कंज्यूमर थ्योरी के क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज सारे देख सकते हैं. तो कंज्यूमर बिहेवियर के क्वेश्चन लास्ट 15-20 ईयर में एक भी नहीं है, या रेयरली अगर मिलेंगे तो एक दो क्वेश्चन बैकवर्ड बेंडिंग लेवल सप्लाई का वाले.
बट स्टार्ट के जो कंटेंट होगा चला हो जाए उसमें 100 पेज 150 पेज वो सब कंज्यूमर थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो आई एम नॉट रूलिंग आउट दैट देयर विल बी नो क्वेश्चन इन फ्यूचर, बट जो पास्ट पैटर्न है वो सजेस्ट करता है कि क्वेश्चन आपको इनफ डायरेक्शन मिल रहा है कि आप माइक्रो के अंदर क्या पढ़ो और आप कैसे पढ़ो उसे और कहाँ से पढ़ो. अगर मैं क्वेश्चनिस पढ़ रहा हूँ और उससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बन जा रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बार बार वहीं से रिपीट होकर के आ रहा है, तो उसका मतलब दैट विल बी अ बेटर सोर्स. रिगार्डिंग क्लासिकल मॉडल, इफ आई कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम फ्रॉइन and students who are writing as it is from the front, they are scoring more. So I can say that this is the best source for that topic. So for each topic there is a preferred source, but obviously there are certain things which has been explained in the HL Ahoja better. So for that, like for example distribution theories, Caldo distribution, and welfare economics, Pareto criteria, Caldo-Hess criteria, तो वो सारे कंसेप्ट हैं. तो इफ़ यू आर हैविंग दैट एच एल आउजा फॉर माइक्रो एंड मैक्रो ऑन, देन नो प्रॉब्लम विद दैट, बट दैट एच एल आउजा इज helping in micro and macro, not for other. That is international, you have to read different source. Growth and development, you have to read different source. In international economics, since the weightage is around 100 marks, there will be two sources. In fact, international economics is divided into two parts. One is theories of trade, and the other is balance of payment and foreign exchange market. For theories of trade, the preferred source should be Paul Krugman, and for international economics, you should be reading Salvatore. So I will just mention that. In international economics, one part is theories of trade and other is balance of payment and foreign action market. So for that first topic, that is theories of trade, Paul Krugman, because recent year question basically suggests that the paper is being set from according from that source, like inter-industry trade, intra-industry trade, new trade theories, better explained in that book as compared to Salvatore. But balance of payment and foreign exchange market, for that purpose Salvatore. Although अगर completely Salvatore से ही पढ़ते तो there is no major issue, but if you ask me what is better, then for theories of trade, I will say Paul Krugman, and BOP and foreign exchange market refers Salvatore. And few questions of 2020 लास्ट डे के जो क्वेश्चन है वहाँ से कुछ आइडिया लगते हैं कि कुछ नए सोर्सेस की भी ज़रूरत है. लाइक वन क्वेश्चन, I will show that question first. This is a question paper of 2020. ठीक है, लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस विच आर वेरी प्रेडिक्टेबल, मतलब जिसके आंसर आपको पहले से मालूम होंगे, प्रैक्टिस कर रखा होगा. लाइक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर था. मेडल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, इसके वेल प्रिपेयर्ड आंसर होंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, but there was one new question in the form of distinguish between post-Keynesian approach to horizontalist and structuralist theory of endogenous money supply. Now ये question usually I think really कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है अगर उसने पहले से स्पेसिफिकली इसको नहीं पढ़ा हुआ. Now ये नए क्वेश्चन हो गए, इसके लिए यू हैव टू सर्च, दैट मीन्स इन एनी कन्वेंशनल बुक यू आर नॉट गेटिंग दिस टॉपिक. ठीक है, जो भी आप अवेलेबल सोर्सेज आप बता रहे हैं उसके अंदर नहीं होगा, बट वी so you have to search for that. So a specific PDF has been uploaded for this question separately. तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमें मिलते जाते, नए फॉर्म में मिलते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेबस को थोड़ा स्ट्रेच करते रहे. बट इट डज नॉट मीन
कि यू शुड बी रीडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमारा अप्रोच वन ऑफ क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। टोटलिटी में 28 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 28 2 और 3 क्वेश्चन नए मिलेंगे एंड यू विल बी गेटिंग दोज न्यू क्वेश्चन एवरी ईयर। जितने मर्जी आप कवर करके जाओ, 2 या 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे नए मिल जाएंगे। एंड अगेन आई रिपीट, 2-3 क्वेश्चन नए मिलने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इवन इफ दे कम इन द कंपल्सरी में अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, 4 प्रेडिक्टेबल थे तो 4 आप इजी ले सकते थे, दोनों सेक्शन में एक क्वेश्चन हो गए तो यू कैन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, तो वो मैंने 100 मार्क्स जो मैंने कहा डिफिकल्ट है उसके लिए रखा है, और वो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर के लिए। बट जो 150 में 100 स्कोर करना है, मतलब जो टारगेट है वो आप अटेन कर सकते हैं। और ये नहीं कि दिस विल बी अ नॉर्म दैट इन एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग दैट क्वेश्चन इन द कंपल्सरी सेक्शन। The question basically what I am trying to show is, this was question in section B. Explain how Keynesian speculative demand for money is restated in the regressive expectation model. Regressive expectation model. अब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, बट ये क्वेश्चन अब इस कंटेक्स्ट में पूछा गया रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल के फॉर्म में, एंड पॉइंट आउट द लिमिटेशन। You will find this regressive expectation model the first topic in chapter number 12 Branson, जो demand for money का concept है। That means that chapter is being referred, that book has been referred now, we can say introduced. So few more question may be asked from those sources, so you can add another source in the form of Branson, but again I say you don't need to buy that book। जो relevant chapter होंगे उसके जेरोक्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, वो साइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो साइट पे या मेल पे आपको नोट्स वाले सेक्शन के अंदर दिख जाएगा। तो ब्रैनसन के 2 चैप्टर, एक डिमांड फॉर मनी और एक कंजम्पशन, बिकॉज कंजम्पशन के भी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखते, लाइक लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इंटरटेम्पोरल हाइपोथेसिस, रैंडम वॉक। So if you are expecting that you will be able to solve some new question, then you have to read some new topic as well, ठीक है। अगर आपको ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे नए क्वेश्चन बनेंगे, तो नए क्वेश्चन तभी बन सकते हैं जब आपने कुछ नया टॉपिक पढ़े। अब नए टॉपिक कितने पढ़ने हैं वो एक क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज हाउ मच टाइम यू विल कैन डिवोट एंड व्हाट विल बी द रिटर्न। हो सकता है आप नए टॉपिक बहुत सारे पढ़ो और उसमें से ना भी आए कोई, सो दैट डिसीजन यू हैव टू टेक। बट जो रेलिवेंट लग रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंगली हो सकता है या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर से कुछ क्वेश्चन में ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो वहाँ से आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो एक्चुअली इन टेस्ट सीरीज व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तो ठीक है 28 क्वेश्चन, बिकॉज वी विल ऑल्सो हैव अ लिमिटेशन कि आप कितने क्वेश्चन नए डालें वहाँ पे। सपोज फॉर एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन मैंने 28 नए डाल दिए, आप एज अ स्टूडेंट उसको अपेयर करोगे, बोलोगे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है, तो वो डिप्रेसिंग हो जाएगा। फिर सारे नए क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे वहाँ पे, और सारे अगर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही डाल दिए, फिर आप कहोगे सारे तो प्रीवियस ईयर में के अंदर आ ही रखा था, इसमें नया क्या है, फिर नए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस, कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कितने नए क्वेश्चन है। सो बट I will be doing from this test series that जो 28 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 इंक्लूडिंग पार्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट इन दैट एवरी टेस्ट सीरीज सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन विल ऑल्सो बी गिवन, ठीक है, वो टेस्ट का पार्ट नहीं होगा बट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो दोज हु वांट टू रीड मोर, दोज हु वांट टू राइट मोर आंसर, दे कैन अटेम्प्ट, बट दैट विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ द सीरीज, बट वो ईच टेस्ट के नीचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे जो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व सम न्यू क्वेश्चंस, देन यू हैव टू अटेम्प्ट दोज न्यू क्वेश्चन एज वेल। क्लियर? सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द source. In the growth and development I mentioned, growth and development you have to keep ML Jingan plus your study material. So this was all about paper 1.
Now briefly I will be explaining the approach of paper 2, the approach of paper 1 and paper 2. पेपर 1 के अंदर स्कोर में काफ़ी वेरिएशन होता है, और जहाँ वेरिएशन ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क का एलिमेंट भी ज़्यादा हो गया. तो वेरिएशन अगर ग्रेटर है, इन द सेंस वेरिएशन ग्रेटर मीन्स you are, some students are scoring 160 also, 155 also, and some students are scoring less than 100 also. So there is a greater range. So in paper 1 अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया और आपने प्रैक्टिस कर रखा है, देन यू हैव अ पोटेंशियल टू स्कोर 160 170 ऑल्सो, और कभी कभी ओनली 60 और 70 भी हो जाते हैं. ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके साथ ही हो रहा है, जो पढ़ के गए उनके साथ भी हो सकता है ये. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पेपर 1. इतना ज़्यादा वेरिएशन पेपर 2 के मार्क्स में नहीं होता. पेपर 2 के मार्क्स में अगर आप बहुत ज़्यादा बेटर आंसर लिख रहे हैं, ऑल्दो कुछ स्टूडेंट स्कोर करते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजॉरिटी, 130 प्लस माइनस आई विल से 10 मार्क्स एट द मैक्सिमम, 7 to 8 मार्क्स ज़्यादा. दैट मीन्स 120 से लेके 140 के बीच, मतलब अगर नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो भी 120 के आसपास स्कोर कर लोगे, और बहुत अगर एफर्ट किया, बहुत अच्छा अगर पेपर लिख लिया तो भी 140 के आसपास जा रहे हैं. एक दो एक्सेप्शन होंगे जिनका 150 प्लस होगा, बट मेजॉरिटी की बात मैं कह रहा हूँ. तो वहाँ वेरिएशन कम है, मतलब रिस्क का एलिमेंट कम है. बट पेपर 1 में रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा है. यहाँ पे लेस देन 100 होने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. बट अगर आपने प्रॉपरली उसको पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है फिर. बट अदरवाइज अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, जस्ट आप यू नो दैट, अच्छा आई नो द कंसेप्ट ऑफ क्राउडिंग आउट, आई विल बी एबल टू राइट दैट आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल, वहाँ डिफिकल्टी है. यू रिक्वायर एग्जैक्टनेस देयर. अब इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग टेलर रूल के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करना है, तो जब तक वो टेलर रूल आपको पता नहीं है तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो वहाँ एग्जैक्टनेस रिक्वायर्ड है. पेपर 2 के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा बहुत हेल्प जीएस पेपर 3 से भी मिल जाता है, तो वो भी थोड़ा हेल्प करता है. सो पेपर 1 इज अप्रोच इज ऑल अबाउट दिस. प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. पेपर 1 की ही लेक्चर आपको यहाँ भी ज़्यादा मिलेंगे. विल बी स्टार्टिंग विथ पेपर 1 क्योंकि वो ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड आई थिंक स्टूडेंट रिक्वायर मोर असिस्टेंस इन पेपर 1 एज कम्पेयर टू पेपर 2. पेपर 1 के अंदर आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है. पेपर 1 के अंदर ज़्यादा इलेबोरेशन है, ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर होने की ज़रूरत है. सो पेपर 1 अप्रोच इज दैट. नाउ explain paper 2. Paper 2 is all about Indian economy, and the syllabus is dividing it into 3 parts. One is pre-independence era, so it is economic history. Other is pre-reform period or pre-liberalization period, so pre-1991, and third is post-reform, so it is since economic reform. So after 91, this is before 91, and this is before 1947. So syllabus साइट के ऊपर जो अवेलेबल है वो इस फॉर्मेट में. Just see that. Paper 2, Indian economy in the pre-independence period. Certain topics has been mentioned. Then Indian economy after independence, and that after independence is divided into 2 parts: pre-liberalization period and the post-liberalization period. But I have divided this paper 2 into 10 different parts. ठीक है, I think that is better approach. And your approach in paper 2 should be studying more sectoral, sector specific पढ़ने हैं. फॉर एग्जाम्पल यू चूज़ इंडस्ट्री एज अ सेक्टर, तो इंडस्ट्री एज अ सेक्टर चूज़ किया तो उसके अंदर जितने क्वेश्चन है वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और वो प्री लेवलाइजेशन और पोस्ट लेवलाइजेशन दोनों एक कंटिन्यूटी में पढ़िएगा. सो दैट विल बी अ बेटर अप्रोच. सो पेपर 2 आई हैव डिवाइडेड बेसिकली इनटू 10 different parts, and
you can write if you want what are the 10 different parts. Starting with one part will be obviously this pre-independence economic history. Regarding economic history, I will say that that is pre-independence. Recently, last 2-3 years, or you can say 3-4 years now, वेटेज प्री इंडिपेंडेंस वाले सेक्शन का ज़्यादा है, मतलब 3-4-5 क्वेश्चन तक वहाँ प्री इंडिपेंडेंस से आ रहे हैं, और वो स्टैटिक पार्ट हो गया. मतलब एक ये भी परसेप्शन होता है कि पेपर 2 तो मोर डायनेमिक है, इसमें करंट वाले क्वेश्चन होंगे सारे. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगेन इन पेपर 2 रिमेंबर देयर विल बी इन टोटालिटी 28 पार्ट्स. तो अगर 28 पार्ट्स है वहाँ पे, तो उस 28 पार्ट्स का ब्रेकअप देखना है कितने क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होंगे. तो प्री इंडिपेंडेंस का जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक है. दैट मीन्स आप इसको पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है. ड्रेन थ्योरी के क्वेश्चन कई बार हैं, रेलवेज का क्वेश्चन है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है. सो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं. तो प्री इंडिपेंडेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेपरेट किए गए. ये टॉपिक वाइज में आपको साइट पे ऊपर मिल जाएगा. एनालाइज द, लाइक 2020 का क्वेश्चन है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th century, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग 1857 to 1947, examine the currency policy of the British. So you will find 1 question, 2, 3, 4, 5 question from the pre-independence period. कुछ क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, कुछ 15-20 के, अराउंड 60-75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो 1 and in 2019 also you will find 1, 2, 3, 4, 5. So generally 5 parts, 4 to 5 parts are from pre-independence period. For this pre-independence era Indian economy, one source is SSM देसाई. ठीक है, हिमालय पब्लिकेशन की एक बुक है SSM देसाई. वो हैंडी बुक है, इजी बुक है, यू कैन रीड. देयर आर मेनी चैप्टर्स जो रेलिवेंट टॉपिक है. मतलब देखिए, अप्रोच ये होगा कि आप पहले इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्री इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, तो इसके आप टॉपिक एक जगह लिस्ट कर लेंगे. लाइक कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, रेलवे हो गया, ड्रेन थ्योरी हो गया, वैसे लिस्टिंग कर लीजिए. और उस लिस्टिंग को करने से पहले ये क्वेश्चन देख लेना. ये आपको हेल्प करेगा लिस्टिंग करने के लिए कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं. एंड आफ्टर लिस्टिंग दोज टॉपिक्स, ईच टॉपिक पे आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड राइटअप होगा. मतलब 200 वर्ड्स अराउंड, 200-250 वर्ड्स अराउंड, वेल प्रिपेयर्ड राइटअप. मतलब बुक से देख करके वो डायरेक्टली लिखना है अपने नोटबुक में, सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ना नहीं. ठीक है, उसको आप अपने नोटबुक में पहले लिख लेंगे. मतलब वो इन एडिशन टू, मतलब क्लास के अंदर भी वो सारे होंगे, बट अगर आप अपनी ओन स्टडी बना रहे हैं तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ. उसे एक्सप्लेन करने, मतलब उसे राइटअप के फॉर्म में पहले उसको रेडी कर लेना है. तो एक सोर्स आपका SSM देसाई की बुक हो गई. इसका जेरोक्स कॉपी, स्कैन कॉपी वैसे अवेलेबल है, मतलब साइट के ऊपर अवेलेबल है, वो मिल जाएगा आपको. जीके कोर्स में नोट्स वाले सेक्शन के अंदर होगा. तीर्थंकर रॉय की बुक भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके भी कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर दिया गया है. इरफान हबीब के कुछ चैप्टर होंगे वो इंक्लूडेड हैं, और अदर सोर्सेज हैं. तो यू विल बी गेटिंग वन स्पायरल एज वेल. उसमें अलग अलग जो सोर्सेज होंगे वो कंपाइल्ड है. सो दिस विल बी योर फर्स्ट टॉपिक. आफ्टर दैट जो प्री और पोस्ट रिफॉर्म है, इसको प्री और पोस्ट रिफॉर्म में ना करके आप उसको सेक्टर स्पेसिफिक कर लीजिए. सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब हो गया टेक वन सेक्टर एज एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर को टोटलिटी में पढ़ना है, प्री और पोस्ट रिफॉर्म मिला करके. तो आप एग्रीकल्चर लिया तो फ्रॉम इन एग्रीकल्चर व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, देन एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, recent agriculture laws, what are the controversy, you have to be very specific in that. तो पहले वो लिस्टिंग करना है, और लिस्ट करने के लिए अगेन जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसको पहले देखना है कि एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से सेक्शन से वो क्वेश्चन है. 20 में यू फाइंड 3 क्वेश्चन, 19 में अगेन यू फाइंड 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन. सो 3 और 4, 5, 3 to 5 क्वेश्चन आर जनरली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्शन. तो ये हेल्प करेगा कि आप एरिया स्पेसिफाई कर लेंगे, एंड फॉर दैट एरिया अगेन यू हैव टू प्रिपेयर योर राइटअप.
एंड फॉर दैट पर्पस नाउ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है इंडियन इकोनॉमी में, वो सोर्स के फॉर्म में यू कैन रेफर मिश्रा एंड पुरी, इंडियन इकोनॉमी, and EPW articles are included in उमा कापिला. इजी रीडिंग है तो मिशन पूरी वो आई थिंक आंसर फ्रेम करने में ज़्यादा हेल्प करेगा, और ज़्यादा एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन EPW के आर्टिकल्स में है, और वो एडिटेड फॉर्म में उमा कापिला के बुक में. इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग EPW आर्टिकल नाउ डेज ऑल्सो, बिकॉज वो थोड़ा वॉल्यूमिनस हो जाता है और एवरी वीक आपको 14-15 आर्टिकल मिल जाएंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेपरेट देम कि कौन सा रेलिवेंट है कौन सा रेलिवेंट नहीं है. और वो जो रेलिवेंट वन होता है वो फिर न्यूज़पेपर वगैरह में एडिटोरियल पेज के अंदर आ ही जाता है. सो इवन इफ़ यू आर नॉट रीडिंग EPW रेगुलरली, मैंने जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसको सेपरेट कर रखा है और वो स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड है. यू विल फाइंड द सेम थिंग इन उमा कापिला एज वेल. तो सोर्स में मेनली 2 बुक, and for recent part economic survey, जिस ईयर भी आप एग्जाम दे रहे हो उस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रीवियस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे. तो एग्रीकल्चर किया, और एग्रीकल्चर में लाइक एग्रीकल्चर ग्रोथ या डेवलपमेंट है, यू विल फाइंड वेरी रेलिवेंट आर्टिकल बाय महेंद्र देव. तो ये एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड तो बहुत सारे आपको रिसेंट आर्टिकल मिल जाएंगे. तो मतलब वो सब कुछ आपको सप्लीमेंट करना होगा. दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा आपका भी एफर्ट होगा इन द सेंस कि रेगुलरली उसको अपडेट करना है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट, एक टॉपिक आपने लिया एग्रीकल्चर का बेसिक या डायनामिक, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने नोट कर लिया वहाँ पे, और जस्ट लीव 1 पेज ब्लैंक आफ्टर दैट, सो दैट व्हेन यू रीड एनी न्यूज़पेपर यू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन. जस्ट राइट इट देयर, उस जगह ही लिखिएगा एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में, सो दैट पेपर से एग्जामिनेशन से पहले आपके पास सारे सोर्सेज एक जगह होंगे. सर्वे आएगा, सर्वे का डेटा अपडेट किया, उसको भी उसी जगह लिखा हमने. सो 1 टॉपिक विल बी एग्रीकल्चर, देन सेकंड इज, थर्ड इज इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. सर्विसेज स्मॉल टॉपिक है, इसको यहाँ क्लब कर देंगे. तो यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे जितने भी पार्ट्स होंगे, लाइक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, MSME, ये पहले टॉपिक कैटेगरी पहले बनानी है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है उसको बनाना है, फिर वो एक एक सब टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है उसका सोर्स है, और वो राइटअप के फॉर्म में रेडी होना चाहिए. ठीक है, वो आपका प्राइमरी वर्क होगा. मतलब जो 5-6 मंथ आप प्रिपेयर करते, मतलब 5 मंथ अराउंड अगर आप ऑप्शनल पे डिवोट करते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी वर्क होगा इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2. वो इंटायर राइटअप प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए. क्लियर? वो एफर्ट आपको करना पड़ता है और किसी भी ऑप्शन में करना पड़ेगा. 4-5 महीने आपको लगाने हैं वो इन एनी ऑप्शन. सो इंडस्ट्री एंड सर्विस विल बी वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, विल बी द एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ, उसका ट्रेंड एंड कंपोजिशन. सो मतलब इंटायर ग्रोथ का ट्रेंड फ्रॉम 1947 to 2021. Students should be very clear about that trend, that what was happening in the first 3 decades, 1950s, 60s, 70s. It was characterized by slow rate of growth called as Hindu rate of growth, primarily determined by the growth rate of agriculture. Then from 1980 onwards there was a higher growth. So why there was higher growth after 1980? What was the change? So popularly we know that the cut-off year was 1991, but here you will be studying that it was not 1991, but in fact it was 1980. So what was the change? After 1991 economic reform, how that growth momentum picked up further, but that momentum was lost after 97-98 till 2003-4. Then from 2004 to 2008-9 again we find a dream run, that is high rate of growth, and after that again slow down. और आज की डेट में अब उसका कोविड और उसका इम्पैक्ट, पैंडमिक और उसका इम्पैक्ट, तो वो 1947 से या इफेक्टिवली जब प्लानिंग पीरियड स्टार्ट करें 1951 से लेकर के 2021
उस एंटायर पीरियड को फेज वाइज आपको ग्रोथ और उसका कंपोजिशन क्लियर होना चाहिए कि हाउ दैट ग्रोथ वाज डिटरमाइंड, व्हाट वर द मेजर फैक्टर ऑफ लेट अस से हाई ग्रोथ रेट और स्लो ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या था, सर्विस का कंट्रीब्यूशन क्या है और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड हाउ दे हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So this is an important part. I think a student should be starting with this part, growth of trend. Then you can read agriculture, industry and services. Then a fifth will be all questions related to public finance. All questions related to that public finance. So public finance will be including all tax policies, any question related to GST, questions related to the government expenditure, plus questions related to fiscal policy, questions related to finance commission, decentralization, वो सारे पब्लिक फाइनेंस के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस the sixth topic, you can club all problems in one, like poverty, unemployment, inequality, demography को भी उसमें ऐड कर दिया तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन बन जाएगा. एंड यू विल फाइंड दैट जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें से कोई एक रेगुलरली पूछे जाते हैं और कभी कभी काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है क्वेश्चन. लाइक पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन, रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी के मेजरमेंट में जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की थी उसमें क्या डिफरेंस था. अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो फिर वो बहुत एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन. अब ये 2019 का क्वेश्चन, हाउ इज द मेथडोलॉजी फॉलोड बाय रंगराजन कमेटी डिफरेंट फ्रॉम द तेंदुलकर कमेटी इन मेजरिंग पॉवर्टी. तो जब तक वो एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, it will be very difficult, and this was I think in compulsory section. तो इस फॉर्म के क्वेश्चन आपको तो जितने भी टॉपिक हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक जगह क्लब कर दिया. सो दैट विल बी वन, poverty and unemployment. Then seventh is monetary management. तो मॉनेटरी मैनेजमेंट में मनी और उससे रिलेटेड पॉलिसी और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इनफैक्ट यू कैन से मनी, इवन दिस विल इंक्लूड बैंकिंग, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनपीएस, देयर प्रॉब्लम, बैंकिंग रिफॉर्म, recent banking reform. Then one major sector will be external. So external sector will be basically including questions related to composition and direction of foreign trade, export import policy, FDI, role of that, balance of payment उसका trend. तो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर जितने भी एस्पेक्ट रिलेटेड टू बीओपी और उससे रिलेटेड कंसेप्ट होंगे, लाइक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के क्वेश्चन कई बार आ गए, तो वो सारे क्वेश्चन आप एक जगह क्लब कर देंगे. ये ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइंड है, आपको अलग से एफर्ट नहीं करना है. एक्सटर्नल सेक्टर, बीओपी, एक्सचेंज रेट, ठीक है. टॉपिक वाइज करने का एक एडवांटेज ये होता है कि हर टॉपिक का आपको वेटेज पता चल जाता है कि इस टॉपिक्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड. सो 3 to 4 क्वेश्चन अगेन यू फाइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सेक्टर. इवेलुएट द रोल ऑफ एफडीआई इन कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ऐसे क्वेश्चन का आपके पास वेल प्रिपेयर्ड आंसर होगा, ठीक है. WTO, ट्रिप्स, WTO एंड इंडिया. सो क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल सेक्टर. तो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एफर्ट नहीं करना, सोर्स कहाँ पे पढ़ना है उसके रिलेटेड एफर्ट नहीं करना. देन वन पार्ट इज इन फैक्ट वी कैन सेपरेटली से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. तो ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. और 10th में जितने भी करंट एस्पेक्ट है वो ले लेंगे. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स,
गवर्नमेंट एक्ट्स, तो जितने भी करंट एस्पेक्ट हो गया वो ले लिया, मतलब आप इसे इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करें तो ज़्यादा बेटर है। तो सिलेबस ने डिवाइड कर रखा है इसको 3 पार्ट में, और यहाँ क्लास के अंदर इसको 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड सोर्स इज ऑब्वियसली basic source will be for pre-independence SSM Desai, and for other part it is Mission Puri and Uma Kapila and EPW article, but don't forget to read your daily and newspaper, ठीक है, वहाँ से सप्लीमेंट करना, मतलब वैल्यू एडिशन है। पेपर 2 में अप्रोच ज़्यादा सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि सिमिलर आंसर लिखे थे आपने बट नंबर क्वाइट डिफरेंट आ गए, ठीक है, या 2 कॉन्ट्ररी व्यू लिखा था बट फिर भी नंबर दोनों के आ गए। लैंग्वेज पे अगर जो बेटर कंट्रोल है, थोड़ा एक्सप्रेशन बेटर है, प्रेजेंटेशन ठीक है, तो पेपर 2 के अंदर स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर कंटेंट कम है बट आप प्रेजेंटेशन से या लैंग्वेज से उसको बेटर आंसर लिख सकते हो वहाँ पे। और रिसेंट्स वाले, मतलब इट ऑल डिपेंड अपॉन विच क्वेश्चन यू चूज़। इनफैक्ट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन को चूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन के अंदर भी हैं, वो अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो वो एस्पेक्ट पता होना चाहिए। बट जनरली यू कैन स्कोर मोर हेयर ऑल्सो, बट वेरिएशन रिस्क थोड़ा कम होता है यहाँ पे इस पेपर के अंदर। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रिस्क कम है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं भी हैं तो भी बहुत ख़राब नंबर नहीं आएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो भी हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि इसके अंदर ज़्यादा नंबर आएगा। पेपर 1 में कह सकते हो, पेपर 1 में आप कह सकते हो कि अच्छा ऐसा हमने सारा लिख दिया है। अब लेटर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही लास्ट ईयर के 1 या 2 थे, अगर वो आपने बना लिखा है, प्रैक्टिस किया हुआ था, बन गए आपसे, तो ऑब्वियसली स्कोर ज़्यादा आ जाएगा। तो एग्जैक्टनेस ज़्यादा पेपर 1 के अंदर है। तो आई थिंक पेपर 2 की स्ट्रैटेजी रहेगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स इन पेपर 2 एज कम्पेयर टू पेपर 1 इज ऑब्वियसली लेस। इन पेपर 1 अगर अराउंड 85 to 90 लेक्चर लगते हैं जनरली, तो पेपर 2 30 to 40 लेक्चर के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इन टोटलिटी करीब 120 से 130, 120 to 130 लेक्चर विल बी देयर। The other important part is that this batch is today is 18th of October। ये क्लास आपकी अराउंड आई सेड 120 to 130 लेक्चर्स स्प्रेड ओवर 4 to 5 मंथ, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट इंटायर पेपर 1 विल कंप्लीट देन पेपर 2 विल स्टार्ट। पेपर 2 के लेक्चर इस बैच के अंदर साइमल्टेनियसली भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये 18 अक्टूबर से आप कह सकते हो कि इट विल गो टिल नवंबर, दिसंबर एंड देन टिल मार्च। बट दोज हु आर अपेयरिंग इन 22, ठीक है, जो 22 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए जनवरी 22 यहाँ तक आई थिंक ऑप्शनल रेडी हो जाना चाहिए उनका कंटेंट वाइज, सो दैट जनवरी से लेकर के जून उस पीरियड के अंदर आप प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोज आर बेसिकली, अगर 1 ऑफ क्लास है, एवरीडे क्लास करते जाओगे, वहाँ से जनवरी तक कोई इशू नहीं है। बट जनवरी के बाद सम स्टूडेंट को ये फील हो सकता है कि अब उन्हें अभी ऑप्शनल ना पढ़ के प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सो विल ट्राई टू कवर एज मेनी क्लास एज पॉसिबल। और जिनका मेंस अभी है, मतलब 21 का, बिकॉज 21 के एग्ज़ाम डिलेड हुए हैं, 22 से तो शेड्यूल्ड है अपने, 21 का तो प्रीलिम्स लेट हुआ है बट उसका मेंस अब ड्यू है इन जनवरी। तो जिनको 21 मेंस के लिए क्लास करनी है वो बैच करें जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, जिसमें पेपर 1 की सारी क्लासेस अपलोड हो गई है, जो मई में स्टार्ट हुआ था 28 में, उसमें 90 ऑड लेक्चर्स पेपर 1 के अपलोड हो गए। तो वहाँ पे एक्सेस लेकर के वो उस क्लास को जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज डोंट हैव टाइम। बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर 22 देन यू हैव 2 ऑप्शन नाउ। एक तो इस नए बैच के साथ अपनी क्लास करते जाओ, एवरीडे 1 लेक्चर अपलोड होता जाएगा और ये क्लास आप देखते जाओ। दूसरा, अगर आपको लगता नहीं मुझे 2 महीने के अंदर ही कवर कर लेना है, 2.5 महीने में कवर कर लेना है, उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स पे फोकस करता हूँ, देन इन दैट सिचुएशन यू कैन टेक दैट कोर्स एज वेल, जो मई में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, दिस ईयर इटसेल्फ।
तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, जो डिफरेंसेस होंगे वो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज इन बोथ केस विल बी गेटिंग द न्यू वन, आप ओल्ड बैच करो या न्यू बैच करो, दोनों ही सिचुएशन में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। क्लियर? सो and apart from this, some of you may also be preparing for Indian economic service. So regarding the difference in approach for Indian economic service and IAS, I said in this 120 to 130 lecture will be there, but in economic service around 200 lecture will be there. Out of that 200, this 120 to 130 lecture is common. That means for both the batch it will be same. But the remaining, you can say 80 or 90 lectures, which is mainly for general economics 1, because economic service के अंदर फिर 4 पेपर है, general economics 1, 2, 3 और Indian economy और plus general studies and general English. This is including micro numerical. वो माइक्रो न्यूमेरिकल इधर ऑप्शन में उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कंज्यूमर थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस इकोनोमेट्रिक्स, मैथ्स, स्टैट्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो प्लस जनरल स्टडीज़ की भी क्लासेस आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए अवेलेबल कराई जाती है। तो ये 80 to 90 लेक्चर आपके स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर इकोनॉमिक सर्विस है। सो व्हेन यू क्लब दिस 80 and 90 विथ ऑप्शनल क्लासेस, देन योर कोर्स कंटेंट फॉर इकोनॉमिक सर्विस इज देयर। तो जो लेक्चर्स होते हैं ये 120 to 130 वो दोनों में कॉमन होते हैं। एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी भी सेम है, दोनों के क्वेश्चन अगर आप भी मतलब अगर ऑप्शनल दे रहे हैं तो आप भी इकोनॉमिक सर्विस वाले कुछ क्वेश्चन देखें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब जो वो क्वेश्चन जो ऑप्शन में पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल वाली बात नहीं कर रहा कि आप उसके न्यूमेरिकल करो, और जो इकोनॉमिक सर्विस दे रहे हैं उनके लिए तो बेटर है ही कि वो ऑप्शन के सारे ही क्वेश्चन देखो, ठीक है। बट अप्रोच ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, तो टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ डिफरेंट होगी। इकोनॉमिक सर्विस के लिए टेस्ट सीरीज डिफरेंट होगा और ऑप्शन के लिए टेस्ट सीरीज डिफरेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट एंड हाउ टू proceed, how to start, and from where to study, what will be the source. The key that I will be emphasizing again is your source must be very exact, primary source होना चाहिए। From those primary source you must have a well prepared answer, well prepared content or write up. Practice those write up again and again, only then you can learn it, only then you can reproduce it in the test, only then you can reproduce it in the final mains. राइटिंग इज की, राइटिंग विल बी द की। पढ़ने से ज़्यादा लिखने का काम करना, लिखना ज़्यादा है, बार बार लिखेंगे तभी आप फाइनल एग्जाम में वैसे लिख पाओगे जैसे बुक में लिखा हुआ है। अगर ये परसेप्शन है कि ठीक है आई नो द कंसेप्ट नाउ आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस एंड राइट इन द एग्जामिनेशन, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट यू आर राइटिंग, एंड दे आर नॉट UPSC is not requiring answer in your language, they are requiring answer in the language in which it has been mentioned in the core book, ठीक है। तो उसको रेफर करते हुए लेक्चर होते हैं सारे। जो राइटअप होगा आपके पास वो राइटअप अराउंड मोर देन आई थिंक 1000 to 1500 पेजेस के डेली आंसर जो आप डेली का कंटेंट लिखेंगे वो हो जाएगा। तो इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग स्टडी मटेरियल, यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन दिस क्लास। सो क्लास को आपको इस फॉर्म में माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल सबके लिए सेपरेट स्पायरल मेंटेन करें, प्लस in the test series you will be getting model answer. So I said in one test there will be 336 question, majority of question के आंसर मिल जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेगा, इकोनॉमिक सर्विस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी कवर होंगे, और अदर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे। तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर तो ये, बट सिंस वो टेस्ट सीरीज़ एनुअली हमारे लिस्ट पॉइंट पे ये प्री प्रीलिम्स से पहले भी एक होता है, प्रीलिम्स के बाद भी होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे टेस्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सो वी हैव इनफैक्ट अ पूल ऑफ मोर नंबर ऑफ मॉडल आंसर। तो मॉडल आंसर आपको ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑल्दो ऑब्वियसली टेस्ट के फॉर्मेट में यू विल बी गेटिंग दैट 12 टेस्ट, बट आई प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू मोर आंसर। तो आई थिंक
500 से 700 क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन अगर 2 साइड में भी लिखे हुए हैं तो 1200 पेज का आपका वो मॉडल आंसर का एक सेपरेट स्पाइरल होगा। रीड दोज नोट्स अगेन एंड अगेन, बट अल्टीमेटली you have to write it and apply your concept as well, because some question require application, they are not directly there. It is not that वो notes पढ़ा, कुछ question मिलेंगे जो directly answer require करते हैं, but in some question you have to apply, you have to apply your concept, then only you can answer it. Clear? So I think that is enough for the orientation, and now we can start with the lecture. So orientation my concept, I think I have addressed all. If some more queries there, you can directly call me. If you have still more query, I think I have tried to address all, but if still you have any more query, you can call me directly on this number. So now we can start with the lecture.